Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the lesson plan, how to make a lesson plan, an effective lesson plan. As a teacher, we use lesson plan in our teaching method, teaching strategies to deliver a content, to deliver a topic in a classroom. Okay, let me see the definition. What is a lesson plan? A teacher's detailed description of the course of instruction for an individual lesson. किसी भी कोर्स किसी डिस्क्रिप्शन है किसी टॉपिक के हवाले से ठीक है जो आपने पढ़ाना है उसे हम कहते हैं लेसन प्लान जो एक सिस्टमेटिक वे में होता है जिसके कुछ स्टेप्स हैं अ लेसन प्लान इज अ written guide for trainers plan in order to achieve the intended learning outcomes. It provides specific definition and direction on learning objectives, equipments, instructional material, requirements, and conduct of the training. Right? Lesson plan एक written guide है for trainers okay, to plan and order the learning outcomes okay, through which we achieve our learning outcomes. Okay, जिसमें तमाम टॉपिक के हवाले से जो टॉपिक आप डिलीवर कर रहे हैं उसके हवाले से ऑब्जेक्टिव इक्विपमेंट्स इंस्ट्रक्शन मीडिया रिक्वायरमेंट्स ठीक है इस तरीके से आपने इसको डिलीवर करना है तो तमाम चीज़ें आपको क्या करना है इस लेसन प्लान में मेंशन करना होगा टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड में आपने इस लेसन को डिलीवर करना है ओके थिंक व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लेसन प्लान क्या पर्पस है हम क्यों बनाते हैं कम्युनिकेट टू यू मीन्स कम्युनिकेट टू योर स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने के लिए फॉर द डिलीवरी ऑफ कंटेंट ठीक है ताकि स्टूडेंट से बआसानी एक सिस्टमेटिक वे में बातचीत हो सके कंटेंट के हवाले से और लेक्चर डिलीवर कर सके ओके थिंक व्हाट टू कंसीडर व्हेन राइटिंग अ लेसन प्लान हम लेसन बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे किन बातों का ख्याल रखेंगे वो आप देख सकते हैं व्हाट टू कंसीडर व्हेन राइटिंग अ लेसन प्लान नो योर स्टूडेंट्स हमें मालूम होना चाहिए हम किन स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उनका लेवल क्या है ओके उनका जो स्टैंडर्ड क्या है इंटरेस्ट क्या है ठीक है तो जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो हमें देखना है कि लेसन प्लान हम किन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं एबिलिटी एंड इंटरेस्ट लेवल बैकग्राउंड अटेंशन स्पेंस ability to work together in groups prior knowledge and learning experiences special needs and or accommodations learning preferences these all uh, points which we have to know when we writing our lesson plan okay और स्टूडेंट की इंटरेस्ट उसका बैकग्राउंड क्या है ये तमाम चीज़ हमें मालूम होना चाहिए व्हेन द नो द कंटेंट हमें कंटेंट नॉलेज का मालूम हो कि हम कौन से कंटेंट नॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं ओके सब्जेक्ट मैटर दैट यू विल बी टीचिंग वी शुड नो दैट which topic or which subject we deliver in a class in which class level we know that okay state school district curriculum guides national and state curriculum standards ये तमाम चीज़ें हमें अपने जहन में रखना है जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं नो द इंस्ट्रक्शनल मीन्स टीचिंग मटेरियल्स ठीक है विच वी यूज़ इन आवर टीचिंग मेथड जो हम टीचिंग मेथड में यूज़ करते हैं मटेरियल्स इक्विपमेंट्स उसकी बात होती है वो भी हम मालूम होना चाहिए हम कौन सी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर ऑडियो विजुअल एड्स
Okay, teacher mentors, community resources, equipments, library resources, local guest speakers. These all types of resources and materials we use in our teaching method. Okay, ये भी हमें मेंशन करना होगा ताकि ऑन द स्पॉट हमें मालूम हो सके कि हम कौन से मेथड के तहत कौन से मटेरियल के तहत हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं आज अब what to consider when designing a lesson plan ability interest level ये सब हो गया backgrounds attention spans ability to work together in groups prior knowledge and learning experiences special needs और accommodation learning preferences जो मैं बेशक कर ली ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को जब हम लेसन प्लान बना रहे हो तो हमें ये बातें स्टूडेंट्स के लिए मतलब स्टूडेंट के हवाले से बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है इंटरेस्ट लेवल क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है कौन स्कूल से आया है किस क्लास से आया है ठीक है अटेंशन स्पेन कितनी है इनकी तवज्जो कितनी होती है क्लासरूम के अंदर कि वो ग्रुप में काम कर सकते हैं नहीं सकते हैं ठीक है उसकी नॉलेज क्या प्रायर नॉलेज क्या पास नॉलेज क्या है ठीक है और स्पेशल नीड की किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है या नहीं ये देखना हमने ठीक है subject matter that you will be teaching we know the subject matter we know the subject name of a specific topic state school district curriculum guides national state curriculum standards know the material technology software audiovisual aids teaching mentors community resources equipment library resources local guest speakers these all are the materials which we use in our teaching method in teaching lesson plan we write in our lesson plan which technology we use which teaching mentors we have to uh, use in a classroom इक्विपमेंट्स कौन से हमें यूज़ करने हैं क्लासरूम के अंदर तमाम चीज़ें हमने मेंशन करना है लेसन प्लान के अंदर ओके अब आ जाएं की कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स के मिलकर एक लेसन प्लान बनता है सबसे पहले प्रोफाइल होना चाहिए इसका ठीक है मतलब ये इसमें आएगा क्लास क्लास नेम टीचर नेम सब्जेक्ट नेम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन ठीक है ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी ऑब्जेक्टिव्स आ जाए लर्निंग आउटकम्स मटेरियल इक्विपमेंट्स क्या है प्रोसीजर क्या होगा टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी टीचिंग मेथड क्या होगा असेसमेंट वेब असेसमेंट क्या होगा ठीक है ये 5 कंपोनेंट्स लेसन प्लान के की कंपोनेंट्स नंबर 1 इज प्रोफाइल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन ठीक है प्रोफाइल में क्या होगा बेसिक इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द लेसन नेम ऑफ लेसन कंट्रीब्यूटर सब्जेक्ट ग्रेड लेवल इन विच क्लास at student life instructional setting small group whole class general description of lesson standards these all points we should notice in our profile of lesson plan okay objectives determine you want student to learn and be able to do focus on the concept and skills which you intend to teach organize for example organize design prototype content these websites that are easy to navigate and search you determine what you want students to learn and be able to do आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है लेसन प्लान के जिस टॉपिक के हवाले से आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं ठीक है कि ये मिसाल के तौर पर अगर मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ इस अलजेब्रा पढ़ाने का लर्निंग आउटकम्स क्या होगा इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेंगे ठीक है मिसाल के तौर पर अलजेब्रा पढ़ाने के बाद स्टूडेंट को मालूम होगा कि इसमें फॉर्मूला किस तरह यूज़ करते हैं ठीक है और अथमेटिकल जो स्टेप्स है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें स्टूडेंट्स को मालूम हो जाए तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाएगा ठीक है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका अच्छा थिंक द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल वी यूज इन आवर लेसन प्लान materials PowerPoint presentation, video aids, textbooks, journal articles,
multimedia materials, instructional video and audio, job ad, rubric, checklist. These all are equipments we use in a materials we use in a lesson plan. इक्विपमेंट कौन को इस्तेमाल करेंगे हम द इक्विपमेंट्स अवेलेबल फॉर द इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर के लिए अवेलेबल हैं कौन कौन इक्विपमेंट commonly used instructional equipment software applications PowerPoint MS Word Excel these all are software application media player is also computer equipments होने चाहिए computer internet connection video equipment projector these all types of technology equipments which should have to in should have टू और टीचर ओके तो टीचर के पास ये तमाम चीज़ें होना चाहिए इक्विपमेंट्स ये हम लेसन प्लान में मेंशन करेंगे कौन से इक्विपमेंट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक विच वी डिलीवर इन द क्लासरूम अब आ जाए प्रोसीजर आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस आउटलाइन करने स्पेसिफिक ऑफ स्टेप्स को अपने यूजफुल इंस्ट्रक्शनल स्टडीज कौन से हैं यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्निक इन योर लेसन प्लान कौन से टीचिंग मेथड को हम यूज़ करेंगे ये बताना है अब आ जाए मेन से असेसमेंट देन assess the outcomes and to what extent the objectives were achieved हमने देखना है कि जो आउटकम्स हैं हमने मेंशन किए थे वो अचीव हुए या नहीं ensure the assessment activity in directly and explicitly tied to the static objectives जो असेसमेंट हमने किए वो अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट जो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव आया है या नहीं ये हमने इंश्योर करना है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन द रिजल्ट्स एंड रिवाइज द लेसन प्लान अकॉर्डिंगली ठीक है रिजल्ट के लिए ज़्यादा टाइम लगता है एग्ज़ाम लेने के लिए हमें चाहिए कि उसको रिवाइज कर लेसन प्लान को ठीक है क्लासरूम के अंदर इन द एंड ऑफ सेशन इन द एंड ऑफ क्लास असेसमेंट थिंग द असेसमेंट एक्टिविटीज अवेलेबल फॉर द इंस्ट्रक्टर कौन कौन असेसमेंट जो एक्टिविटीज़ है टीचर को पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी है सम कॉमनली यूज असेसमेंट एक्टिविटीज़ क्विजेज हम ले सकते हैं क्विज ले सकते हैं क्लासरूम इन द एंड ऑफ क्लासरूम कि हमें मालूम हो गया हमारे लर्निंग आउटकम अचीव हुए नहीं है ठीक है टेस्ट हो जाता है शॉर्ट टेस्ट independently perform worksheets different worksheets we use in our lesson plan cooperative learning activities collaborative learning debate hands-on experiments hands-on experiment means practically work in a classroom oral discussion answer question answer session is all the equipment the method we should assist the students in a classroom we mention the activity of assessment in lesson plan and explain take time to reflect upon the result and revise the lesson plan accordingly. Now we discuss about the models of lesson plan. Three lesson plan models. Number one is Gagnas, Gagnas 9 events of instruction, Madeline Hunter's 7 steps lesson plan model, and five is model. These three models regarding to the lesson plan models. Okay, we discuss one by one, and after this lecture we discuss in detail these three lesson plan models. Okay, number one is Ganga's event 9 events of instruction. गंगास मॉडल जो है वो रॉबर्ट गंगास ने 1992 में पेश किया था 1992 से लेकर 2002 तक के दरमियान ये मॉडल रहा है ओके इसके तो इसको 9 स्टेप्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने लेसन प्लान को क्या करना है मॉडल करना है अपने लेसन प्लान को बनाना है प्रिपेयर करना है नंबर वन है गेन अटेंशन ठीक है अटेंशन हमने देखनी है स्टूडेंट कितनी अटेंशन हो रही है कितने को फोकस हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर इन्फॉर्म लर्नर्स टू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ठीक है लर्नर्स को पता उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टिमुलेट रिकॉल एंड ट्रायल लर्निंग ठीक है
रिकॉल करें, पास्ट लर्निंग को रिपीट करें, प्रेजेंट द स्टिमुलस, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, एडिट परफॉर्मेंस मीन्स प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, प्रोवाइड फीडबैक, असिस्ट परफॉर्मेंस, एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर. These are the steps of 9 events, the last 9 events of instruction. Now we discuss about the Medline Hunter's 7 steps lesson plan model. Number one is a review. Again, we review the lesson plan and the topic which we discuss in the classroom, and this anticipatory set objectives, input and modeling, checking, understanding, guided practice, independent practice. These are the 7 steps of Medline Hunter we use in the lesson plan. Now in the end, the 5 E's model. Engage. First of all, we should engage a student in a classroom. Okay, during and before the lesson plan, we have to focus on our lesson plan during the teaching learning process. एक्सप्लोर, हमने स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. तो एक्सप्लेन की तरफ आएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वजाहत होगी, वो एलिबरेट करेगा स्टूडेंट्स. ठीक है, उसको अपने अंदाज में अपने ऑन वर्डिंग में उसको बयान करेगा. फिर हम क्या करेंगे एज ए टीचर, उसको जज करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे. ओके, स्टूडेंट ने कितना सीखा. एक्टिविटीज़ आपने करनी है क्लासरूम के अंदर. लेसन प्लान बनाना है आपने किसी भी सब्जेक्ट का, इसमें आपने स्ट्रेटेजीज टेक्निक को यूज़ करनी है, बताना है. 30 मिनट्स का पीरियड आपका टाइम ड्यूरेशन आपके टॉपिक का 30 मिनट हो. 30 मिनट आपने कोई भी टॉपिक लेना है, उसका लेसन प्लान बनाना है. ओके, सैम्पल भी आपको मैं सेंड कर दूंगा. तो शेयर योर लेसन प्लान विद द क्लास. Critique other groups' lesson plans and discuss how to fix the existing problems. Learning objectives are clearly defined. Instructional materials, equipment, techniques, and studies are clearly selected. This procedure is clearly studied. These are the uh, points which you have focused when you prepare your lesson plan. Okay, this is a reference. Thank you for listening. Any question you must ask me. Okay, Hafiz. Jazakallah.